अच्छा Good evening, everyone. Welcome back to another episode of this virtual discussion of arthritis in India, a nationwide dialogue. I am Dr. Nishant Sharma, your moderator for the evening. This series is a joint initiative by Voice of Healthcare and Pfizer, talking different spaces of arthritis and its care in India. We will be discussing about what is arthritis. We'll talk about some management strategies. We'll talk about prevalences, public health initiatives, and measures of prevention. So without further ado, allow me to welcome my panel of speakers. We have with us Dr. Manoj Khatri, consultant rheumatologist at Dr. Manoj Center for Rheumatology and Clinical Immunology, Jodhpur. Good evening, Dr. Khatri. Thank you for joining us. Most welcome. Thank you. We'll be having Dr. Arun Prathani, Additional Director in Orthopedics and Joint Replacement at Fortis Hospital, Jaipur, and Dr. Rajiv Gupta, Senior Ortho Surgeon, Robotic Surgery and Shoulder Surgery Specialist, Dr. Rajiv Gupta's Arthroscopy and Sport Injury Center, Jaipur, also joining us while we start this discussion with Dr. Manoj. So, Dr. Manoj, my first question to start this particular panel of discussion, please educate our audience about. Yeah. Hello. So, Yeah. please educate our audience about what is arthritis and what are the different types of arthritis and some common symptoms that a patient presents with in arthritis. Please, sir. Okay. Okay. So arthritis is simply means that the patient has inflammation in the joint. So inflammation in joints means there is the symptom of inflammation will be pain, morning stiffness, and swelling in the joint. As I told, it's just a finding. Okay, it's just a symptom. पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस हो सकते हैं मतलब आर्थराइटिस है ये एक बीमारी का केवल एक सिम्टम है तो पेशेंट को बहुत सारे टाइप के आर्थराइटिस हो सकते हैं बिगिनिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच यूजुअली अफेक्ट नी जॉइंट्स एंड हैंड जॉइंट्स सिमिलरली पेशेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है जो स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है हाथ के और पांव के समटाइम्स पेशेंट में हैव बैक पेन बिकॉज ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस ऐसे सोरियाटिक आर्थराइटिस नाम की इलनेस होती है जिसमें सोरियासिस के साथ आर्थराइटिस होता है कुछ लोगों को डायरिया के बाद और यूटीआई के बाद इन्फेक्शन के बाद आर्थराइटिस हो जाता है कई बार सिंपली पोस्ट डेंगू पोस्ट चिकनगुनिया आर्थराइटिस भी होता है तो सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस व्हिच आर कॉमन एंड फ्यू ऑफ देम एक्चुअली आर एसोसिएटेड विद वर्स प्रोग्नोसिस जैसे डेर्मेटोमायोसाइटिस हो गया जिसमें आर्थराइटिस मसल्स में स्वेलिंग होती है आईएलडी होती है फेफड़ों में सिकुड़नपन आती है सिमिलरली एसएलई हो गया सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटोसिस हो गया जिसमें आर्थराइटिस के साथ में किडनी में स्वेलिंग आती है स्किन में घाव बनते हैं स्किन में मुंह में छाले बनते हैं जॉगरेन सिंड्रोम नाम का गठिया होता है जिसमें मुंह सूखा रहता है आंखें सूखी रहती है तो आर्थराइटिस का मतलब है जिसके पेशेंट को दर्द है स्वेलिंग है अकड़नपन है जोड़े में दैट्स ऑल और ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है ठीक है Thank you for starting this conversation, Dr. Manoj. So, for all our audience, I want to also know how does a clinician reach the diagnosis of an arthritis? If a patient walks in, what is the method that you follow for diagnosis? Also, early diagnosis का क्या importance है for the overall treatment outcome of arthritis, please? So when it comes to arthritis, it's a chronic disorder. Most of them are chronic disorder, not all of them. Like post-viral arthritis हो गया, that usually subside over few days. Attack of gout may subside for few days. So there are few arthritis which are actually temporary and will subside over time. Rest of them are going to stay long with you. लंबे टाइम तक पेशेंट को रहता है लंबे टाइम तक सफरिंग रहती है और जैसा मैंने बताया कि वी वांट टू फाइंड द इलनेस अर्ली मैंने जैसे बताया आर्थराइटिस जो एसएलई की वजह से भी हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी होता है सिंपली फाइब्रोमाइल्जिया जैसी कंडीशन में भी आर्थराल्जिया हो सकता है आप बैठो तो एज ए क्लिनिशियन हम पहले डिसाइड करते हैं पेशेंट को आर्थराल्जिया है आर्थराइटिस है तो रियल आर्थराइटिस में पेशेंट को जोड़ों में स्वेलिंग होती है मॉर्निंग में उठ के आधा घंटा स्टिफनेस रहती है अगर ऐसी समस्या है तो पेशेंट को और ज्यादा एवोल्यूशन की जरूरत है सपोज पेशेंट को सिंपली आर्थराल्जिया है तो फिर हम वेट कर सकते हैं एवोल्यूशन से पहले
दूसरी चीज, हमने एक बार आर्थराइटिस कंफर्म कर लिया, देन वी नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, until unless there are obvious deformities in the hand or feet. अगर obvious विकृतियां हैं जोड़ों में तो हमें जांचों की जरूरत नहीं है. Otherwise we will need lot of investigations to look for the kind of arthritis the patient is suffering from. A patient with inflammatory arthritis can have SLE. With lupus nephritis means there might be swelling in their kidneys. So in that case, we want to find the diagnosis early with arthritis. If we diagnose the patient at the stage of lupus nephritis when the kidneys are already involved, then we are on the wrong path. We have to prevent the illness before it becomes large. Right. So early diagnosis is important. The earlier we diagnose, the better the results are with the management. Right. Thank you, Dr. Manoj, for mentioning about the diagnosis But and early diagnosis. one more thing I was asking, should I speak in Hindi or English? Because Sir, I'm trying to. we can have the conversation bilingual. आपके patients आपसे सबसे ज़्यादा जिस language में connect करते Okay, हैं, feel free to okay, use that okay, language. Thank okay. Then Hindi would be a good option. Okay. No problem. Good evening, Dr. Arun. Thank you for joining. Your camera isn't on. Yeah, it We is can't. on, but somehow it is from my side it is on, but वो अच्छा. शायद stream नहीं हो रहा है. I'm just working on that. Shall I Okay, log okay. out and try to log in again? If you can, sir, I'll have the conversation with Dr. Manoj. Meanwhile, you can maybe try to log in again, please. Yeah, would be great. Thank you. All right. Yeah. So, Dr. Manoj, while Dr. Arun tries to set his system back up again, uh, let's talk about the importance of multidisciplinary approach in managing arthritis, including the collaboration between rheumatologists such as yourself, orthopedic surgeons, and other physiotherapists, occupational therapists. How do you think this multidisciplinary approach benefits patients? So actually, as I told, arthritis is simply not the pain of joint and disease of joints alone. So we need to suppose we are talking about simplest arthritis that we see, rheumatoid arthritis. सबसे common arthritis, almost 1 in 100 people gets affected with this arthritis. Mostly these patients have only joint pain, joint swelling, morning stiffness. Over time patient जो है वो deformities develop कर जाते हैं if they are not treated properly. At that stage we need occupational therapist. In early stage we need physical therapists to reduce pain and improve the function of the joints. Mhm. The disease is not only associated with joint illness. As the time passes, patients are at increased risk of ILD, that is interstitial lung disease. What we call is the lungs tend to shrink in that disease. Patient may even develop skin ulcers when we may need the help of plastic surgeons. These patients are also at increased risk of heart attack and myocardial infarction and CVA, that is stroke. तो ये सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं पैरालिसिस के और हार्ट अटैक के. इन सब चीजों को जो है रोकने के लिए हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है इन द केस ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, दैट इज आरए. बट इफ यू टॉक अबाउट समथिंग एल्स लाइक जॉगरेन सिंड्रोम, तो पेशेंट का मुंह सूखा रहता है, आंखें सूखी रहती है, दांत खराब हो जाते हैं. यहाँ पे हमें डेंटिस्ट की भी जरूरत पड़ती है और साथ में हमको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ती है. आरए में भी अगर हम बात करें तो पेशेंट को आईज में दिक्कत हो सकती है, जैसे स्क्लेराइटिस हो गया, ड्राई आईज रहती है, वहां अगेन हमको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है. अगर हम एसएलई की बात करें तो यहाँ पे लूपस नेफ्राइटिस होता है तो हमें किडनी के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है. साथ में कई बार ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो न्यूरोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है. तो आर्थराइटिस में यूजुअली वी नीड सपोर्ट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो. सपोज पेशेंट्स के जोड़े ही खराब हो गए, अब नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो मैं ऑर्थोपेडिशियन को इन्वॉल्व करना पड़ता है. Right. Thank you, Dr. Manoj. Dr. Arun, your camera still is not functioning, but let's Yeah. just I think start the conversation. Okay, now it does. We can It's okay now. we can see. Hi, good evening. Good evening. Thank you for I think joining. something was stuck on the camera head. No problem, sir. So we were just discussing with Dr. Manoj. We have already covered what is arthritis, some common signs and symptoms, and the importance of a multidisciplinary approach and early diagnosis as it holds. So, in continuation to the conversation, Dr. Arun, my next question will be for you. Being a practitioner through the mode of Yeah. this arthritic awareness campaign,
what are some common misinformations, myths, or misconceptions about arthritis in India that you have seen that you'd like to bust, please? So again, as Dr. Manoj said, there are various types of arthritis. कई तरह के हैं. तो the commonest is osteoarthritis, age-related degeneration. दूसरा rheumatoid inflammatory arthritis कई तरह के होते हैं. So जो age-related arthritis के हिसाब से commonest misconception है लोगों की कि खड़े खड़े पानी पियोगे उससे आर्थराइटिस हो जाता है, या फिर जैसे कि आप खटाई खाओगे तो खटाई खाने से आर्थराइटिस बढ़ जाता है, या फिर लोग कहते हैं कि ये जैसे एक बार आर्थराइटिस हो गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है. तो खाने पीने से ज़्यादा अगर आर्थराइटिस पे किसी चीज़ का फर्क पड़ता है, तो एक तो है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन. आपके परिवार में अगर आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हुआ है तो आपको भी जल्दी होने की संभावना है. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगेन जेनेटिकली मॉडिफाइबल होता है. तो अगर जेनेटिकली आपके पेरेंट्स में है, आपके रिलेटिव्स में है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं. पोस्ट वायरल आर्थराइटिस अगेन एक बहुत कॉमन एंटाइटी है. तो जैसे कई लोग चिकनगुनिया वायरस के बाद सोचते हैं कि साहब ये दर्द जो रह गया ये एक आम बात है. वो आम बात नहीं, वो पोस्ट वायरल आर्थराइटिस है. तो पोस्ट वायरल आर्थराइटिस को अगर आप ट्रीट करेंगे ढंग से और केयर करेंगे तो वो रिकवर भी हो जाता है. और सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर के पास जाओगे आर्थराइटिस के लिए सीधा ऑपरेशन बताता है. तो ऐसा नहीं है. ऑपरेशन सिर्फ तभी बताया जाता है जब आपके वो या तो स्टेज एडवांस है या मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तभी. तो आर्थराइटिस अगर है तो टाइम से डॉक्टर को दिखा के दवाई लेने से, सारे प्रिकॉशन करने से कंट्रोल हो सकता है. एडवांस स्टेज में जाके सर्जिकल ऑप्शंस कंसिडर होते हैं. Right. Thank you, Dr. Arun. Dr. Manoj, as we have discussed about the diagnosis, the symptoms, moving over to the next part of this conversation about management of arthritis. So, could you share and put some light on some effective arthritic management strategies, including physical, pharmacological, surgical, or lifestyle modifications that you recommend and you usually explore, please? Okay. As I told, arthritis different types के होते हैं. So single drug do not fit for everyone. Suppose patient has knee joint osteoarthritis. In that case, we simply ask the patient to undergo physical therapy, ask them to lose some weight, which will help them. Ask them to modify their routine activities, not to sit down on the floor. सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अवॉइड करने को बोलते हैं. ये सारी चीजें करते हैं तो इससे क्या होता है, हम आगे जोड़ों के डैमेज को बचा पाते हैं. पेशेंट को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हैंड है तो उसमें फिजिकल थेरेपी करवाते हैं. हॉट बैग में हॉट वाटर में हाथ डुबा कर रखने को बोलते हैं. एक बॉल दे देते हैं जिसको स्क्वीज करके मसल स्ट्रेटनिंग करने को बोला जाता है. तो दीज आर वेज वी गो अहेड विद फिजिकल थेरेपी. सपोज पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है बिगिन विद, तो ऐसी कंडीशन में फिजिकल थेरेपी में हम हीट थेरेपी देते हैं अगर लंबे टाइम से जोड़ों में दर्द है तो. और एक्यूटली अगर पेन हुआ तो उसमें हीट थेरेपी नहीं देते हैं. रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट्स करवाते हैं, जितने मूवमेंट जोड़े में पॉसिबल है उन सबको करवाते हैं ताकि मूवमेंट्स बने रहे, डिफॉर्मिटीज ना आए. तो ये तो एक रहा हमारा फिजिकल एक्टिविटी वाला पार्ट. स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों हार्मफुल रहते हैं आर्थराइटिस में, तो हम यूजुअली पेशेंट्स को मना करते हैं, अवॉइड करने को बोलते हैं. कई बार पॉसिबल नहीं होता पेशेंट्स के लिए. Then physical activity, we ask the patient to live a normal life in rheumatoid arthritis. तो जैसे वो नॉर्मली जीना चाहते हैं. हमारा टारगेट ये होता है कि बीमारी को इतना कंट्रोल कर दिया जाए कि पेशेंट को बिल्कुल भी फील ही ना होगा उनको आर्थराइटिस है. एंड दिस इज पॉसिबल विद करेंटली अवेलेबल मेडिकेशन. जो हमारे पास आज मेडिकेशन अवेलेबल है उनके साथ ये पॉसिबल है. तो व्हाट वी, अब आती है फिजिकल थेरेपी की बात. तो हमारे पास जो मेडिसिन है उसमें से काफी सारी दवाएं ऐसी जो कैंसर में यूज होती है, जैसे लेफ्लोमाइड हो गया या मेथोट्रेक्सेट हो गया. तो लोगों में बहुत फियर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयों को लेके, और फियर एक्चुअली सही भी है. अगर अनट्रेन्ड पर्सन इन दवाइयों को यूज करेगा तो पेशेंट को साइड इफेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है. इसलिए हम रूटीन मॉनिटरिंग भी करते हैं. दवाइयां देने से पहले मॉनिटरिंग की जाती है, फिर मंथली बेसिस पे हम वापस ब्लड टेस्ट करवाते हैं. कई बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बार बार टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं, बट दे आर मैंडेटरी टू लुक फॉर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन. तो methotrexate, leflunomide, sulfasalazine, HCQS, iguratimod, these are the 5 medications which are available from basic DMARD. इसके बाद हमारा हम बात करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस आते हैं बायोलॉजिकल के, which are also quite safe in safe hands, जो उनको बहुत frequently यूज करते हैं. जैसे rheumatologist होंगे तो उनके हाथ में वो सेफ रहती है. and they provide really good relief, extremely great benefits
इन पेशेंट्स ऑफ आर व्हाट वी वांट टू अवॉइड इज हम पेन किलर और स्टेरॉइड्स अवॉइड करना चाहते हैं. कई बार हम देखते हैं पेशेंट पेन किलर स्टेरॉइड ही ले रहा होता है जो अवॉइड करना चाहते हैं. तो कुछ ये मेडिकेशन हो गई. फिर अगर आप सही जगह दिखा रहे हो, एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो या द पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग रूमेटोलॉजी फॉर ईयर्स, तो फिर इट इज वेरी अनलाइकली दैट यू विल फेस एडवर्स इफेक्ट. Right. मोर ओवर कुछ आर्थराइटिस बहुत सीवियर होते हैं. कई बार लूपस नेफ्राइटिस होता है विच रिक्वायर डिफरेंट ग्रेड ऑफ medications, IVIG, plasmapheresis, MPS pulse therapy, all those things might be required. अब उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि दवाएं जो थोड़ी सी रिस्की रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो उनकी डोज जो मॉडिफाई की जाती है ओवर द कोर्स, ओवर द ड्यूरेशन, और ड्यूरिंग मॉडिफाइंग द डोज वी नीड repeated investigation to look for any adverse effect that we can see for those drugs. Thank you, Dr. Manoj. Dr. Arun, in continuation, जो हम Dr. Manoj से discuss कर रहे हैं about the management strategies, being an orthopedician, talk to us about the grades that we see in age-related degenerative arthritis and the surgical modalities that are available, and when can a patient choose, or when you as a clinician decide that the patient requires a surgical intervention. सो अगर Your अपन own, please. ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम 4 ग्रेड में देखते हैं. एवरी ग्रेड कॉरेस्पॉन्ड्स टू अराउंड 25% ऑफ कार्टिलेज डैमेज. तो उसकी ग्रेड डिसाइड होती है एक्सरे के, स्टैंडिंग एक्सरे के ऊपर जॉइंट स्पेस डिमिनिशन पे, कि जॉइंट स्पेस कितना परसेंट आपका लॉस हो गया है. तो 25% लॉस विल एड अप टू 1 ग्रेड. सो 4 ग्रेड का मतलब 25, 50, 75 और 100% लॉस. सो जब तक ग्रेड 3 में पेशेंट है तब तक नॉन सर्जिकल मोडालिटीज कंसिडर होती हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, वेट रिडक्शन एक्सरसाइजेस, वो सब होता है. अगर यंग एज पेशेंट है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 और हमें लगता है कि बहुत जल्दी ग्रेड 4 पे एडवांस हो जाएगा, तो उसको डिले करने के लिए एक हाई टिबल ऑस्टियोटमी करके एक सर्जरी होती है. इसमें बोन का अलाइनमेंट चेंज करके और उस जॉइंट की लाइफ वेट बियरिंग का जो फोकस है वो डैमेज कार्टिलेज की जगह नॉर्मल कार्टिलेज में शिफ्ट किया जाता है, जिससे कि घुटने की लाइफ बढ़ती है. कई बार आर्थराइटिस के साथ में डीजेनरेटिव मेनिस्कस टेयर्स होती हैं, तो वॉशर फट जाता है जॉइंट का, जो पेनफुल हो जाता है सडनली. उसके लिए कभी कभी आर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन की माइनर की होल सर्जरी भी की जाती है. ग्रेड 4 में आने के बाद, मतलब जब पूरा कार्टिलेज खत्म ही हो गया, सो ऑल दीज ट्रीटमेंट्स दे एम टू रिस्टोर, स्ट्रेंथन और रीजनरेट द कार्टिलेज. बट ग्रेड 4 मतलब 100% लॉस ऑफ कार्टिलेज. सो व्हेन देयर इज नो कार्टिलेज टू वर्क अपॉन, कुछ कार्टिलेज बचा ही नहीं है, तो फिर इस समय हमें को सर्जिकल ऑप्शन, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है. जो जॉइंट जो जिसका कार्टिलेज पूरा घिस गया, उस जॉइंट को चेंज किया जाता है. फिर उसके अंदर कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, बट देन मोटा मोटा वो जॉइंट रिप्लेसमेंट का आपका इंडिकेशन बन जाता है जब आप ग्रेड 4 में चल जाते हैं. Right. Thank you, Dr. Arun. Dr. Manoj, coming back to you, any recent advancements or innovative treatments in arthritic management that you have explored and you'd like to educate our audience? I remember abhi plasma and a couple things you were mentioning. So let's talk in depth about the newer technology, the newer medications, the newer treatments available, please. So rheumatology is a dynamic branch. Every other month we get a new drug which is approved by FDA or which is published in any journal, some other great journal. So there are a lot of medications which are coming up, and most of them are biologicals or small molecules which are actually targeted. So these drugs, ये जो दवाइयाँ हैं, या तो ये एंटीबॉडीज होती है या फिर ये बहुत टारगेटेड थेरेपीज होती है. इम्यून सिस्टम में पार्टिकुलर पॉइंट पे काम करती है, जैसे टोफासिटिनिब हो गई, TNF इनहिबिटर्स हो गए, इंटरलूकिन 17 इनहिबिटर्स हो गए, इंटरलूकिन 23, 12, 23 एंटी इनहिबिटर हो गए. So there are a lot of medications which are coming up, and with those medications, I'm pretty certain that 99% of patients of arthritis can do really well. Thank you, Dr. Manoj. Dr. Arun and Dr. Manoj, this question will be for both of you. We'll start with Dr. Arun. So, as we know that there are certain notable regional variations in arthritis, or maybe variations in the socio-economic or the rural-urban, the demographic change. How do you feel, Dr. Arun, that this impacts the healthcare delivery? And talk about these variations as you know, please. Sir, you're on mute.
Dr. Arun, you're on mute. If you can unmute yourself, I got please. it. Sorry. So, arthritis, रूरल अर्बन डेमोग्राफिक बहुत डिफरेंस तो नहीं है. मेनली जो फर्क पड़ता है कि हाउ इज न्यूट्रिशन, विटामिन डी कंटेंट कैसा है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन कैसा है. समहाउ जहाँ पे कि अपन पर्दा ज़्यादा रखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कोई घूंघट में रहती है फीमेल्स, या जैसे बुर्का जिसमें ज़्यादा यूज होता है, तो आपका सन एक्सपोजर पुअर होता है, विटामिन डी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, तो उससे भी आर्थराइटिस तेजी से होता है. ओबेसिटी, जैसे इंडियन पॉपुलेशन में ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा होती है इंडियन पॉपुलेशन में, तो आपका आर्थराइटिस का प्रेडिस्पोजिशन बढ़ता है. फीमेल में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन होता है बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन. इंडियन जो फैमिली सिस्टम है जहाँ पे कि फीमेल का न्यूट्रिशन थोड़ा पुअर रहता है पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट लैक्टेशन, और ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो जाता है, वहाँ पे भी आपका आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं. फिर डिमांड्स ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंस, एक्चुअली जहाँ पे गांव में अपन जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो ओल्ड एज में अगर आर्थराइटिस होता भी है तो दे आर सपोर्ट सिस्टम्स. लाइक बड़ी फैमिली है तो आपके बच्चे वगैरह या पोते पोती आपको हेल्प आउट कर देते हैं. जबकि अर्बन सिनेरियो में जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पीपल वांट इंडिपेंडेंस इवन इन द ओल्ड एज टू बी, rather they would be contributing more to the household work than the working adults. So that ways surgical requirements रूरल अर्बन पॉपुलेशन में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन भी रूरल के मुकाबले अर्बन में पुअर रहता है. बट स्टिल ऑफ लेट हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स इज इंक्रीज, और रूरल पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेटर आउटकम्स एंड better uniformity in surgical techniques. Right. Thank you, Dr. Arun. Dr. Manoj, similar question to you. In your clinical practice, in your expertise, how do you feel ये जो socio-economic rural-urban variation difference है about arthritis, please? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता ये. ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत मैटर करता है. जो फार्मर्स है उनको बहुत जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, दे हैव टू सिट डाउन एंड गेट अप अगेन. और जो वर्कर्स है, लेबरर्स है, उनको बहुत जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नीज पे. पहले कोई ट्रोमा हो गया हो व्हिच इज नॉट टेकन केयर फॉर ऑल्सो लीड टू आर्थराइटिस. बाकी अगर बात करें तो यूजली अगर जेंडर की बात करें तो फीमेल आर प्रेडोमिनेटली इन्वॉल्व इन पेशेंट्स एज फार एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई एंड जोगरेन सिंड्रोम आर कंसर्न्ड. एसपीए नाम का जो हमारा आर्थराइटिस होता है वो फीमेल और मेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. गाउट की बात करें तो इट इज कॉमनेस्ट आर्थराइटिस in the world, but it is really uncommon in India. It is not that common in India. Usually मेल में तो 25-30 साल के बाद भी चालू हो सकता है, फीमेल में ये मेनोपॉज के बाद स्टार्ट होता है. बाकी बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है वो आर्थराइटिस को अफेक्ट करते नहीं है. पुअर वेल्दी एंड एवरीबॉडी गेट्स अफेक्टेड इक्वली. रीजनल चेंजेस आर डेफिनेटली देयर. इन साउथ इंडिया एसएलई वाज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है इसलिए वहाँ पे. नॉर्थ इंडिया में हमारे वेस्कुलाइटिस बहुत कॉमन है. राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है. तो रीजनल वेरिएशन बहुत है. और कुछ ऐसी बीमारियां जो मतलब स्पेसिफिक एरियाज में होती है, वैसे डिजीज वो टर्की साइड बहुत होती है, टर्की और कंट्रीज में बहुत होती है, इंडिया में देखने को नहीं मिलती. ऐसे पेजेट डिजीज है तो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत देखने को मिलती है, इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है. जीसीए की बात करें, जो वेस्कुलाइटिस होता है, जो ओल्ड एज में होता है, वो भी इंडिया में नहीं देखने को मिलता. तो regional variations are definitely there, but socio-economic factors probably do not have great effect on inflammatory arthritis. Osteoarthritis में जरूर laborers जो हैं और farmers जो हैं उनको osteoarthritis जल्दी डेवलप होता है. Right. Thank you, Dr. Manoj, for the answer. Dr. Arun, moving over to you. Now talking about improving arthritic care, some strategies for improving arthritic care. So, how do you feel can healthcare providers such as yourself and the communities work together to improve arthritic care at the grassroots level? Any suggestions? Arthritic care में, so the patient who are not being able to operated upon and have severe grotesque deformities. So we talk from early arthritis to the late arthritis. Early arthritis में you will need support in terms of stairs. So जहाँ पे भी आपको हो सके lift support आपको मिल सके social strata में. बसेस के अंदर प्लेटफॉर्म, जैसे अगर अपन अब्रॉड जाते हैं यूरोप वगैरह में, तो you will see buses
रिक्लाइनिंग टू द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद उसके एक प्लेटफॉर्म से जाते व्हील चेयर एक्सेस भी आपकी बसेस में मिल सकती है। अपने इंडियन सिनेरियो में देखें तो बसेस का वो स्टेप्स बहुत हाई रहता है, तो बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ रैम्प, लिफ्ट, एंड जहाँ पे कि आपको बेटर ऑर्थोटिक्स। तो कई बार जैसे वॉकर की अपन बात करें, कई रूमेटॉइड पेशेंट होते हैं उनके हाथ इतने डिफॉर्म होते हैं कि वो वॉकर को भी ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं। सो बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्थोटिक एड्स, एंड ऑल्सो डेफिनेटली अर्ली सपोर्ट के अंदर अपन को अगर हाई सिटिंग चेयर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न, तो हम तो बेसिक बात करें रूरल एरिया में अभी भी वेस्टर्न टॉयलेट एक बहुत आम बात नहीं है, जबकि मोस्ट ऑफ द आर्थराइटिक नी एंड हिप पेशेंट वुड रिक्वायर वेस्टर्न काइंड ऑफ कमोड टू सिट अपॉन, क्योंकि नीचे से बैठ के उठना आर्थराइटिस में बहुत ही तकलीफदेह हो जाता है। Right. Thank you for that. Dr. Manoj, back to you. This was about talking about how communities and as a whole we can change. What do you believe is the most critical aspect of educating future healthcare professionals such as rheumatologists and clinical immunologists in the context of arthritic care from the caregiver's perspective? Okay, so as far as arthritis is concerned, so training of family medicine people is really poor because we never had teachers who could teach us rheumatoid arthritis and immunology because there are very few DM in this field. So, so this is problem. See, while doing our MD, we did not have much of immunology and rheumatology in our curriculum, at least in practicing curriculum. तो अभी ओवर टाइम बहुत सारी पोजीशन में डीएम रूमेटोलॉजिस्ट पहुंच गए हैं, एंड ऑलमोस्ट most of the 2 tier cities also are rheumatologist with them. So obviously it is going to affect the future. More and more of MD medicine people and MBBS doctors will be more confident in treating the patients of rheumatology in the future. But for now, being still, most of the patients are to be handled only by rheumatologist. Right. Thank you, Dr. Manoj, for that answer. Coming back to you, Dr. Arun. Yes. So while we were just talking about the collaborative effort and the partnership, which has proven obviously effective in combating arthritis, are you aware of any governmental, non-governmental organizations which are helping in raising awareness and providing support for arthritic patients that you would like our audience to be educated about, please? Governmental policies for arthritis? Mm-hmm. I doubt. I not one that I'm aware of. I don't see a uniform government initiative specifically aiming at arthritis. But yes, it seems like a good idea. I mean, probably should be raised to the leaders, and because it is a rampant problem. One thing recently which has helped, which is politically governed, is reduction in the cost of implants in for knee replacement. So NPPA was put, and that is one thing which has made this so-called surgery of elite available to the masses, because now it is available everywhere, and when a surgery is affordable, it becomes more acceptable. So that's what I was talking in my previous statement, that the rural people have also turned on this options of joint replacement. They are agreeing, they are more ready for replacement. We don't have to convince them a lot, because number one, it is affordable, plus we have government schemes like Chiranjeevi and Ayushman, which pays for the whole surgery. So it has made successful inroads in terms of arthritis surgeries, especially the replacements, because it has become more affordable and more approachable for everyone to undergo these surgeries. Right. Dr. Arun, in continuation to the same, we know that, like you were just mentioning, that arthritis, commonly the commonest form of arthritis, the more vulnerable population is the senile, the geriatric population. How do you feel that it affects the elderly, and with the limited access to healthcare resources, how do you feel the overall impact is on a person who is faced by arthritis, please? Can you? I didn't get what exactly you are asking. Can you be more specific? So my question will be, as we know that arthritis affects the geriatric and the Geriatric senile age group. population, let's talk about the psychosocial impact that you feel that it causes on such population, please.
Yeah. So again, as I told you, with the we see the evolution of social structure. When I was a young kid, a joint family was a norm. But as we are looking at it, we are seeing old age homes, we are seeing nuclear families, and even where the parents are living with the kids, the geriatric age group is working way more than what geriatric age group used to work, say 50 years back. So even in my own house, my father would be knowing more about the daily work and affairs of the house, because most of the young population, they go out for the work, and husband both are working. So it is responsibility of more of the geriatric age group who take care of the household and the kids. So the independence, the old age group has increased a lot compared to what it was before, let's say 50 years back. सो व्हेन वी से इंडिपेंडेंस, तो पहले क्या होता था कि देशी भाषा में, हमारे राजस्थान में कहते हैं, 60 पकड़े खाट। बट अभी ऐसा नहीं है। 60 साल का आदमी सारा काम करना चाहता है, उसको लगता है कि मैंने अपना सारा लाइफ परिवार के लिए बिता दिया, अब मुझे घूमना है, मुझे जाना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना है। सो दे आर मोर विलिंग फॉर options which make them independent, make them comfortable with their walk, their pain, so that they want to go outside, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दोबारा वो सब कुछ करना चाहते हैं जो शायद वो यंग एज में मिस आउट कर गए थे। So because of this more demand of being independent, the surgical procedures, especially the replacements, are being on rise, um, to what it was, say, 10 years back. Right. Right. Thank you, Dr. Arun. My similar question to Dr. Manoj also. Your views on the psychological and the And this psychosocial is impact that the arthritis has. fact is, a patient who want to go out will definitely have. Hello. So our patients are actually young patients. Help. Okay. So rheumatoid arthritis usually affects little younger age group. SLE affects even younger age group. So it affects the life of young people who Mm-hmm. are who are working in the offices, who have to fulfill their social role completely, who have to take care of their kids. Female have to cook the food. So there are a lot of responsibilities on those people who are suffering from rheumatoid arthritis. And with that joint pain, which affect the small joints of hands, knees, they find it difficult. Sometimes patient becomes so debilitated that they need somebody to take care for their own routine activities like going to bathroom, even feeding. Sometimes they need help from others because they cannot clench the feast, cannot take the food in the mouth because of elbow deformities. So there are a lot of issues which can arise. I have seen patients where the patient had developed arthritis, and which was cause of divorce among the couples. So it affects the patient's life badly. Uh, there is some people believe that staying in contact with the arthritis patient will have an effect on them that will make them to suffer from arthritis. तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि आर्थराइटिस के पेशेंट के साथ रहेंगे तो हमें आर्थराइटिस हो जाएगा। ऐसी भी भ्रांतियां हैं लोगों को जो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, कीटाणु से नहीं होती है, और सेक्सो लाइफ इफेक्ट होती है कई पेशेंट्स की एएस के अंदर। हमने रिसर्च भी अभी पब्लिश की है जिसके अंदर हमने बताया है कि एएस के पेशेंट्स जो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी जो है वो कम होती है। Patients often feel depressed because they are not able to perform their routine activities and pain is there. So illness is chronic illness and has got great effect on the patient's life, beginning from their routine activity to their pain. Everything lead to depression among these patients. मुझे patients जो दिखते हैं, they are extremely depressed sometimes if they are not treated properly. Right. Thank you, Dr. Manoj. Dr. Arun, very rightly said by Dr. Manoj that arthritis affects a wide range of age groups, from the younger to the older. Talking about the younger population, what lifestyle modifications and preventive measures would you recommend to individuals looking to reduce their risk of developing arthritis or maybe slow down the progress of the arthritis, especially for the younger So, population, as I said, please? the commonest cause of osteoarthritis. Now, rheumatoid is an inflammatory arthritis, so there's no way that we can stop it. We can just control it with
disease modifying drugs as per the guidance of a rheumatologist. But then, if we talk about osteoarthritis, the commonest cause is vitamin D deficiency and poor habits and high BMI, so higher body weight. So, for that, you should keep a check on your body weight, have adequate greens and whites, so that white give you calcium and green give you vitamin D. And if you are taking non-vegetarian diet, so and fish and non-veg will supplement you with vitamin D. Exercise well because of the increasing trend of mobile laptops and all those screens. Yeah, the people are going out less, engaging in sports less. Right? So you should engage yourself in. So you should divide your exercise schedule into aerobics, cardio, and stretching. Now, stretching has a positive effect on joint. So स्ट्रेचिंग प्रॉपर होना चाहिए. ओल्ड एज में स्टिफनेस हो जाता है आर्थराइटिस के साथ में. तो यू शुड कीप स्ट्रेचिंग योर जॉइंट्स. डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखें. डाइट में बैलेंस डाइट रखें. ग्रीन्स वाइट अच्छा रखें. सन एक्सपोजर रखें थोड़ा. और नहीं तो अभी अपने ऑर्थोपेडिशियन या डॉक्टर से मिलकर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन प्रॉपरली दें. तो वो सब करेंगे तो काफ़ी अच्छा है. एक मिसकंसेप्शन लोगों का होता है घी खाते तो चिकनाई बढ़ जाती है घुटनों की. वैसा कुछ नहीं है. घी से सिर्फ वेट बढ़ता है, घुटने की चिकनाई नहीं बढ़ती है. Rather focus on more healthier options. Right. Thank you, Dr. Arun. और Very अगर very आपके नी nicely. में पेन है तो कंसल्ट योर डॉक्टर अर्ली एंड low settings. Thank you. Dr. Manoj, a similar question to you, talking about your preventive measures for the younger population, as well as, let's say, people in the other age groups, for their arthritis, please. Unluckily, we do not have options or ways that can prevent onset of a connective tissue disorder. Uh, we really do not have medications which can prevent the development of rheumatoid arthritis or SLE or anything. As far as gout is concerned, that is arthritis where we ask the patient to remain lean, not to gain weight, control hypertension, blood pressure, diabetes. These patients we can prevent gout or we can delay the onset of gout. Otherwise, as far as rheumatoid arthritis, SLE, Sjogren's syndrome, SP are concerned, we really do not have much of options. We advise patients to take vitamin D if it is deficient, nothing else. Even if the parents have SLE or SPA, we don't have medications or lifestyle changes that can prevent the onset of arthritis among these patients. Thank you, Dr. Manoj. So with this, we'll move over to the last part of this discussion, where, as you guys have already spoken about the preventive measures, even if there are not very limited of those. Dr. Arun, we'll start with you. Your message to everyone as we celebrated World Arthritis Day a few days back, and in continuation to the same, we are hosting this series of awareness campaign and awareness videos. Through the mode of this, we have busted a lot of misconceptions, a lot of myths, a lot of treatment strategies, and the newer things available. Your message to everyone who has engaged with us in this video, be it a patient, be it a caregiver, be it your fellow physicians, please. So message is loud and clear. So arthritis is one most commonest cause of disability in old age. Definitely, we are just talking about joint problems, but you see many of these patients they fall down because of disbalance due to the arthritis, and they end up having a hip fracture as well. So the message is loud and clear. Keep your bones strong, keep your joints healthy. Meet your doctor early if you have pain. There is no pride in bearing the pain. So if you go to the doctor early, he can probably save your joints from progressing into a full blown arthritis. And take good care in terms of decrease the body weight. Don't be a couch potato. Move out, play, give your body some exercise activities, and avoid low sittings if you are already having advanced arthritis. Thank you, Dr. Arun, for that beautiful summed up message. Dr. Manoj, same question to you. The message that you would like to give to everyone through this mode of arthritic awareness campaign that we are running, please. As soon as you develop joint pain, see the doctor. That's the message. Diagnosing early brings the best results.
We cannot prevent inflammatory arthritis, but the earlier we diagnose, the best results can be imparted. Mhm. Regular follow-up is the key for best outcome. Most of the patients take medicines for a month or two and then they just do not follow up, or they keep on taking steroids and NSAID, which have a lot of side effects. So regular follow-up, early diagnosis brings the best results among the patients of arthritis, and arthritis is completely treatable disease. I don't think any field has the number of diseases which can be treated against rheumatology. Rheumatology, each and every disease can be treated. If you Right. call for neurology, nephrology, there are a lot of diseases which cannot be treated. But in rheumatology, you can treat each and every illness. We have options for each and every patient. Hmm. Thank you, Dr. Manoj, for that nicely summed up answer. So, with this, we'll bring this particular panel of discussion to a closure. I'd like to first of all thank Pfizer for powering this. I'd like to thank all the viewers who have engaged with us and spent time getting educated. Finally, and most importantly, I'd like to thank my panelists, Dr. Arun, Dr. Manoj. Thank you for taking time out of your schedules, stepping up with us. Any last words before we close the session? We'll start with Dr. Manoj, please. So awareness and prevention is the key, and I think me and Dr. Manoj, we both concur at the single point. See your doctor early. There is no point in bearing the pain and making the issues worse, and be Right, regular with your treatment. right. Thank you, Dr. Arun. Dr. Manoj, any last words, please? Take the advice from experts, not from the people who have never suffered arthritis. They will give you all sort of advices. The medications are toxic. It is untreatable disease. To get the advice from the experts or from the patients who are actually being treated. Right. Thank you, Dr. Manoj. Thank you, Dr. Arun. It was a pleasure connecting with you people and discussing about arthritis. Thank you. Have a good day. Thank Thank you.